Let's start. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Fine. So we should start with today's session of ours. Just a second, please. Yes, fine. So we should start our session today. Okay, class. So first we are going to do, what we are going to do is, as we all know that we had formed 5 teams of yours, right? Do you remember the teams of your? Do you remember? Everybody remember what your team was? Yes, ma'am. Okay, fine. So can we have? Okay, so first let me tell you what we are going to do today. Fine. Class, are you able to see it? मैम थोड़ा बड़ा हो सकता है ओके मैम, करती हूँ। ऑप्शन पे जाऊँ क्या Is it visible to you now? No, ma'am. Okay, just a minute. Yes, is it readable now? No, ma'am. मैं लैपटॉप स्क्रीन पे ही पढ़ पा रही हूँ मैम इसे Okay, ma'am, just a second. Okay, class, let me do one thing. Let me divide this passage into 2 parts for you so that you can easily read it. Mm, Okay, class, are you able to read it now? Yes, Fine. Okay. थोड़ा सा मैम पीछे करेंगे तो इसको मैं ही यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ Sorry, ma'am. थोड़ा सा इसको ना स्क्रीन पे नीचे मैम थोड़ा सा नीचे रहेगा तो लैपटॉप पे दिखाई देगा Okay, ma'am. दिख रहा है मैम दिख रहा है Okay. Fine now, I guess. Okay, class. Fine. Okay, so what I have done for you in class today, let me tell you one thing. That this is also going to be a team assignment. What you're going to do, I'll be sending this document in your WhatsApp group. और आपको क्या करना है? You're going to, we are going to read this paragraph today, and what you're going to do, you're going to form a small summary. ओके, समरी क्या होती है? आपने जैसे ये पैसेज पढ़ा है, आपको इस पैसेज को अपने वर्ड्स में लिखना है. ओके, क्लास अंडरस्टूड? ओके, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हम इस पैसेज को आज रीड करेंगे क्लास में, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू फॉर्म अ समरी ऑफ दिस पैसेज. ओके, इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसके बाद आपको इससे जो भी समझ में आया है वो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. फाइन? Yes, ma'am. Okay. Everybody understood what we are going to do? We are going to form a summary out of this. Fine? Is it okay to all of you? Okay. If you understood, please raise your thumbs. Fine. Is there anybody is having any confusion? You can ask it. If you are having any issue in it.
Shall we move ahead? Yes, ma'am. Okay, class, fine. So let me read it out for you and then we are going to understand it first. Okay, so are you able to see the cursor? स्टूडेंट्स आपको जो कर्सर है स्क्रीन पर वो दिख रहा है, एरो विजिबल है? मैम थोड़ा सा नीचे कर ओके, सो लेट मी रीड इट फॉर यू. आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे. ओके, व्हेन या फिर आप मैम थोड़ा नीचे कर दो। आई मैम थोड़ा नीचे कर दो हल्का। यस मैम। Okay. Okay, class, let us begin then. Okay, so are you going to read it or shall I read it? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? Anybody willing to read? Fine. Okay, class. So let me read it out. India, also named as Bharat, is a country with the largest population in the world. And is the seventh largest one in terms of land. अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा. ओके, ध्यान से देखिए what we are having. Just a second, please. Fine, class. तो shall we start reading it? अब ध्यान से देखिएगा कि मैं उसे कैसे read कर रही हूँ. Okay? India, also named as Bharat, is the country with the largest population in the world and is the seventh largest one in terms of land. अब देखिए, after India there is a right. यस मैम। Are you able to? तो जहाँ पर भी कॉमा लगा होता है यू नीड टू टेक अ लिटिल पॉज. जहाँ पर भी कॉमा है यू शुड पॉज देयर. ओके, जैसे मैंने पॉज करा, आप ध्यान से देखिएगा वेयर इज अ कॉमा एंड वेयर इज अ फुल स्टॉप और मैं कहाँ पर रुक रही हूँ. इंडिया, also named as Bharat, is a country with the largest population in the world. And afterward, there is also a comma. Again, there is a comma, so you need to take a pause right there. Fine. Okay. यस Largest मैम। population in the world and is the seventh largest in terms of land. It is one of the oldest civilizations, which is extremely rich in culture. It has 28 states and 8 union territories. Okay, so it is written as UT. UT यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, but it is union territories. Okay, fine. Okay, as यस you have and I hope कि आप सभी को ये पता है कि what do you mean by state and union? How many states of India? How many states are there in India? First, tell me. मैम 20 Yes, 20, 8 28 states. And what about the union territory? Do you know what a union territory is? 8 union territory. But do you know what a union territory is? पता है? केंद्र शासित प्रदेश. Anybody of you? मैम नो मैम 9 9? मैम 8 8 or 9? First tell me. Okay, let me clarify it for you. Union territories are 8 in number, not 9. Union territories are 8. Okay. And there are 28 states and 8 union territories. And anybody? Do you know what a union territories is? यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश. एंड व्हाट डू यू मीन बाय केंद्र शासित प्रदेश? देखिए, जो राज्य होता है ना, स्टेट होता है, स्टेट यानी राज्य, उसकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है जनरली. और यूनियन टेरिटरी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंटर.
यूनियन जो हमारी सरकार होती है, डू यू नो आपके स्टेट की अलग सरकार होती है एंड आपकी कंट्री की अलग सरकार होती है ना, राइट? Yes, ma'am. तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसकी खुद की गवर्नमेंट है और वो खुद अनॉटमी में होता है, यानी खुद की गवर्नमेंट हमेशा होती है। लेकिन एक यूनियन टेरिटरी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो ऐसी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। फाइन, ओके, Yes, ma'am. फाइन। तो इस पैसेज में व्हाट वी आर सेइंग इज कि इंडिया जो है ऑल्सो नेम्ड एज भारत, यानी इंडिया का दूसरा नाम भारत भी है, इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री की है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन? वेरी फाइन, जनसंख्या। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में कितने लोग रहते हैं। ओके, लाइक हमारे मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं वो हमारे मोहल्ले की पॉपुलेशन हो गई। हमारी सिटी में कितने लोग रहते हैं वो हमारी सिटी की पॉपुलेशन है। हमारे स्टेट में कितने लोग रहते हैं वो हमारी स्टेट की पॉपुलेशन है। और हमारी कंट्री में जितने लोग रहते हैं वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है। तो जो हमारी कंट्री है दैट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, फाइन, Yes, ma'am. and is the seventh largest one in terms of land. पॉपुलेशन वाइज हम जो है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, यानी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो हमारी कंट्री में रहती है। लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज हमारी कंट्री सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी पूरी दुनिया में 6 ऐसी कंट्रीज है जो एरिया वाइज हमसे बड़ी है। ओके, fine. Acha, anybody of you would you like to tell me which is the largest country in the world in terms of land? Sorry, China. Vaishnavi, did you say China or China? Yes. Okay. Fine. China is the world's fourth largest country. Fourth, not the first. Yes. Ma'am, Australia. Australia? No. Australia is the world's sixth largest country. Okay, let me show you the world's map. America. Not America. America is the fifth largest country. Ma'am, England. Ma'am, Rus. Just a minute. Rus. Yes, Russia. Let me share it to you. Let me show you the map first. Okay. Are you able to see the map? Yes. मैम थोड़ा बड़ा कर दीजिए। मैम थोड़ा बड़ा कर दीजिए। Fine. मैम लार्ज कर दीजिए। Okay, class. आगे दिख रहे हो? मैम प्लीज लार्ज। Just a minute, class. Just a minute, please. मैम इन्हें मारा पहले। Is class, are you able to see it now? Fine. Okay, I'll be sharing this into the group then.
We talked about the largest country in the world, right? So that is Russia. Okay, what happened, Vaishnavi? Ma'am, it's not yet. Ma'am, already. Class, keep on sitting properly. Yes. What I told you that the largest country in the world is, which is the largest country? It is Russia. Yes, Rus in Hindi, and in English we say Russia. Okay, Russia is the world's largest country in terms of land. Okay, बहुत बड़ी country है, and we are the seventh largest country. यानी हमारी country भी बड़ी है, but it is the seventh largest. Okay, इससे ऊपर भी हमारी जो है वो 6 अलग-अलग countries हैं. Fine. What happened, Alia? Alia, are you getting my point? You understand what I'm saying? Fine. So we shall move ahead. It is one of the oldest civilizations which is extremely rich in culture. यानी हमारी जो country है that is very rich in culture. Culture का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब कल्चर संस्कृति. Ma'am, Sanskrit. Yeah, sort of Sanskriti, but you should be answering yourself. Don't take the help of your ma'am. And please don't help them. Let them answer themselves. How will they understand? Yes. So culture क्या होता है? See, when we talk about cultural dance, so we talk about traditional clothes, we talk about traditional music, we talk about the traditions that are being followed. यानी हमारे घर में if we say जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली में अब हमारे पास लाइट्स होती है तो हम हर जगह लाइट्स लगा देते हैं, बट फिर भी हम दिए जलाते हैं दिवाली में. वाई? बिकॉज दैट इज आवर कल्चर. कल्चर का मतलब होता है हमारी संस्कृति, राइट, जो हमारे बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है. तो जितनी पुरानी हमारी कंट्री होगी, जितने पुराना हमारा कल्चर होगा, वो उतना ज्यादा रिच होगा. ओके, फाइन. Yes, ma'am. तो हमारी हमारी जो कंट्री है दैट इज वेरी रिच इन कल्चर. यानी हमारी कंट्री का कल्चर बहुत पुराना है और बहुत ही ज्यादा रिच है. ओके, Yes, ma'am. fine. Who's sitting at back of Jasmeet? Who's sitting behind Jasmeet in the pink sweater? Fine. Okay. Shall we move ahead, class? Did you understand about this much, about the passage this much? Shall we move ahead? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, large. Okay. Are you able to see it now? Yes, Fine. Okay, class. Okay. Yes. It has a huge variety in landforms ranging from the Great Himalayas in the north to the wide coastlines in the south. Okay, let me tell you what about this much right now. It has a huge variety in landforms. What do you mean by landforms? Do you know what does landform means? Landforms का मतलब होता है जैसे उसे आप में से ओके लेट मी टेल यू. आपका बाजपुर है. बाजपुर इज ऑल अ प्लेन सिटी, राइट, बट आपने कभी कभी की फोटोग्राफ देखी है, कभी मसूरी, शिमला, इन सब की फोटोग्राफ देखी है? You might would have anybody of you might would have visited there as well. वहाँ पर कैसे होते हैं? वहाँ पर पहाड़ होते हैं, है ना? तो उनको हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. जनरली लैंड फॉर्म्स क्या होती हैं? वहाँ की फिजिकल कंडीशंस कैसी है? लाइक इफ इट इज अ प्लेन, it is having hills, there are rivers, seas, etc. ओके, तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? पहाड़ हैं, प्लेन है, नदियां हैं, समुद्र है. ऑल दीज आर लैंडफॉर्म्स. ओके, फाइन. और क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में? रेंजिंग फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ. अच्छा,
जब भी हम इंडिया की पिक्चर बनाते हैं, वी जनरली डू व्हाट वी डू, हमारा जो भारत है उसके जो कश्मीर साइड है, जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है, वहाँ पर हिमालयाज हैं। एनीबडी ऑफ यू जो पहाड़ी है, डू यू नो पहाड़ों में जो क्या होता है, हिमालयाज होते हैं। दोज आर ऑल कैसे होते हैं, वाइट कलर के हिमालयाज हैं। बड़े बड़े पर्वत हमारी कंट्री के नॉर्थ में है, एंड दोज आर ऑल कॉल्ड हिमालयाज। ओके। Yes, ma'am. Similarly, what is in the south? To the wide coastlines in the south. Coastlines क्या होती है? Coastlines का मतलब क्या होता है? Coastlines में समुद्र की तट। ओके, फाइन। समुद्र तट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? We call it coastline. Okay, everybody write it coastlines. Everybody, please write it in your notebook. You can take the help of, you can write down the spelling of it from here. Let me highlight it. Coastline. मैम पर्वत के समुद्री तट है। समुद्र के तट समुद्री तट Have written it coastline and dash करके समुद्र के किनारे के तट, समुद्र तट। ओके, you want me to write it? Yes, ma'am. Okay. Okay, class, write it. Please write it in your notebook. Fine. Able to see it now? Okay, okay, write it. Okay, class, written it? Have you all written it? ओके, तो कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्र तल या समुद्र तट की सीमाएं। ओके, फ्रॉम, ओके क्लास, नाउ कंसंट्रेट, एवरीबॉडी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड नाउ। स्टॉप राइटिंग। Stop writing. यानी हमारे, ओके, from far the great Indian desert in the west to the green lush hills of northeast. Fine. What does this mean? Okay, आपने जब आपने एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, you would have seen that there are 4 directions, right? 4 Yes. दिशाएं होती हैं। कौन सी होती है 4 Yes, दिशाएं? ma'am. East, west, north, south. It's fine. The above one is the generally there are 4, the 4 what directions. The upper one that is shown as north, the lower one is south. Here it is the east, and here it is the west.
ओके, तो हम इंडिया की ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर रहे हैं विद ऑल दीज डायरेक्शन। इंडिया के नॉर्थ में कौन सा लैंडफॉर्म मिलता है? द ग्रेट व्हाट? द ग्रेट हिमालयास। फाइन। What are what are found in the north? It is found the Great Himalayas. Okay, class, repeat with me. What is in the north? It is the Great. Yes, what is it? The Great Himalaya. What is it in the north? The Great Himalaya. Fine. Yes, ma'am. And what is in the south? There are coastlines. Coastlines यानी समुद्र तल है. You have seen that India के मैप में नीचे की तरफ क्या है? The Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal, right? तो जो भी नीचे की समुद्र तल की सीमाएं हैं साउथ में इंडिया के, those are all समुद्र तट यानी coastlines है. Okay. In the west, it is the Thar Desert, right? Desert, रेगिस्तान. You know what there is a रेगिस्तान. राजस्थान में रेगिस्तान है. Yes or no? Class, no. Class, there is a what? There is a desert in the west of India. Okay, and that desert is known as Thar Desert. Okay, I think that I have to bring a video or something for you to explain it. Okay, fine. We'll be bringing it. We'll be getting it tomorrow. And in east there are hills, green lush hills. Okay, green lush hills यानी बड़े बड़े हरे हरे पहाड़ हैं. कहाँ पर? In the नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, तो हमारी चारों दिशाओं में नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट चारों दिशाओं में अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं. फाइन क्लास. Yes, ma'am. In the north there are Himalayas. In the south there are coastlines. In the east there are green lush hills. Green hills यानी बड़े बड़े हरे हरे पहाड़ हैं. And in the west there is a desert called, what is it called? Thar Desert. Thar. Okay. What is it called? The Thar Desert. Fine. Okay. India lies between the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal in the east. And in the south lies the great Indian Ocean. Okay, class, I think that this is enough for you today. I guess that we should be writing the summary of this passage. We'll be understanding this passage and you have to write the summary of this passage in short. Fine. इतना आप लोगों को समझ में आया कि इंडिया की ज्योग्राफी हमने एक्सप्लेन की है यूजिंग 4 डायरेक्शंस एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. सबसे पहले हमने क्या बताया दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? इन in our country India. Okay, then हमने ये बताया that India is the seventh largest country of the world. Seventh largest country in terms of land. Okay, then we explained that India में कितने states है? How many states are there in India? And how many union territories are there? Fine. इसके अलावा हमने बताया कि इंडिया की चारों डायरेक्शंस में अलग अलग लैंड फॉर्म्स मिलते हैं. सबसे पहले नॉर्थ में मिलता है हिमालय. क्या मिलता है? हिमालय. इन दी साउथ, साउथ में क्या मिलती है? हमारी कोस्ट लाइन्स. क्या मिलती है? कोस्ट लाइन्स. इन दी वेस्ट, वेस्ट में हमारा क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज नोन एज थार. ओके, what is the Rajasthan Registan called? Registan यानी desert. Do you all understand what is a Registan? Desert. यस, ऐसा इलाका जहाँ बहुत सारी रेत होती है और पानी की बहुत कमी होती है, दैट इज नोन एज अ रेगिस्तान. इंग्लिश में वी कॉल इट अ डेजर्ट. ओके, राइट दिस वन ऑल्सो. डेजर्ट. Yes, and what is a desert called? It is called
Registan. Okay, class, write it now. Yes, Are you able to ma'am. see it? Okay, write it. Done, ma'am. Done? Done, ma'am. Fine. Okay. And please write it also. There is also hill. Yes. Hill is a pahad. And what does a mountain mean? Mountain. What does a mountain means? Mountain का मतलब होता है पर्वत. Okay. Acha. Anybody of you is anybody willing to tell me what is the difference between a hill and a mountain? एक हिल और एक माउंटेन में क्या अंतर होता है? Ma'am, pahad. पहाड़ों और पर्वतों में क्या अंतर होता है? Listen to me. What a Ma'am, hill is, हिल जो होता है जनरली वो एक पहाड़ होता है. ओके एंड इट इज जनरली नॉट कवर्ड विथ स्नो. और जो पर्वत होते हैं वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ होते हैं एंड दोज आर जनरली कवर्ड विथ स्नो. ओके. yes, ma'am. ओके ट्राई दिस. Ma'am, I have done. Is classes done? Okay. Done, That's it ma'am. today. That's it was the session today. I hope that you won't be understanding this session unless I show you some animation or some video. And with the help of that video, you will be able to understand it better. So I guess this is enough for you for today. What I'm going to do, I'm going to send this PDF in the group, and from the group you are going to form a summary. मैंने आपको एक outline दे दी है, and from this you have to write a summary of this passage on your own. Understood, class? Okay, so you have to form a summary of this one. Then, fine. So we are going to check that tomorrow. Okay, fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, class. Okay, class. Let me. I feel we should be moving ahead right now. Okay, fine. Are you able to read it? Let us read it right again. It has great rivers like Ganga, Yamuna, Narmada, and others with large and dense forests. यानी इंडिया की हम नदियों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. that इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी और महान नदियां हैं. लाइक वाइज कौन सी नदियां हैं इंडिया में? नेम लो. गंगा, Saraswati, right? Fine. Saraswati, but Saraswati is a very short river. Okay. Then, then we have Narmada, Kaveri, Krishna. There are several rivers in India also. Okay. Fine. Mahanadi. Yes, Mahanadi. Very fine.
ओके, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। ओके, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी रिवर्स हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत सारी रिवर्स हैं। तो लाइक वाइज वी आर नेमिंग अ फ्यू ऑफ देम राइट हियर, लाइक गंगा, यमुना, नर्मदा एंड अदर्स। और इन नदियों से बहुत सारे बड़े बड़े फॉरेस्ट भी हैं। ओके, फाइन क्लास, what happened? Concentrate on the board. Yes. The cultural heritage is so rich and diverse. The cultural heritage is so rich and diverse that it is completely unparalleled to the rest of the world. यानी हमारी कल्चरल हेरिटेज इतनी रिच है कि पूरी दुनिया में ऐसी कहीं पर भी ऐसी हेरिटेज नहीं है जैसी इंडिया में है। It has made a great contribution to the world in terms of science, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड सो ऑन। यानी हमारी कंट्री ने, इंडिया ने पूरी दुनिया को साइंस, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों में, एजुकेशन में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, यानी हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं साइंस एजुकेशन के बारे में। लाइकवाइज अभी हमने चंद्रयान लॉन्च किया था, आप लोगों ने देखा था इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया था। Yes. तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ, उसने मून पे लैंड किया, तो चंद्रयान 3 ने हम पूरी दुनिया को बताया। जो चंद्रयान 1 था 2008, हमने ही चंद्रयान के थ्रू ही हम पूरे वर्ल्ड को बताया था कि मून पर भी पानी है, राइट। और इस बार का अभी जो चंद्रयान है वो बहुत सारी खोज कर रहा है मून पर, और नई नई जानकारियां हम पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। ऐसे ही वी हैड टॉट द वर्ल्ड अबाउट योगा, राइट। योगा, आज पूरी दुनिया में योगा होती है, बट लेकिन ओरिजिन कहाँ है योगा का? इंडिया, इंडिया से ही योगा शुरू हुई है, राइट। तो दिस इज द पैसेज, यानी हमने पूरी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एक्सेट्रा। दैट्स इट फॉर टुडेज पैसेज। आई विल बी सेंडिंग दिस पैसेज इन द ग्रुप एंड आप इसको रीड करेंगे एक बार और इसकी समरी बनाएंगे। समरी बनाने का मतलब है इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। फाइन, आई एम गोइंग टू टेक योर पैसेज टुमारो। फाइन, I'll be calling every student by their teams. So be ready with your teams, okay? May I have all the team representatives, please? Where is Priyanshi? Priya at the back. I'm able to see. I'm able to see Sakshi also, and I'm able to see the rest of the students also. Fine. Okay, the team representatives of all the teams, please stand up. Priya, Sakshi, Lakshmi, Sunana, and Vaishnavi. Fine. Sunana is absent. Fine. Please tell her so that we are going to take the team sessions tomorrow. Okay? So team representatives, be ready with your teams, right? Okay, class. So we'll be meeting tomorrow. In tomorrow's session, we are going to have another new thing, in which we are going to have the summary of India from your perspective. Okay? Please have a seat, everybody. Fine. So we are going to meet tomorrow at 11 a.m. again. Fine. Class. Goodbye, class. You're most welcome.